Hello students, today we will discuss question number 12 to onward, and we are discussing top 58 questions of chapter 2 solution. In the first part we have discussed up to question number 11. Okay, so hope you are enjoying this video. So question number 12 is that why is vapor pressure of aqueous solution of glucose is less than that of pure water? What is question number 12? Why is the vapor pressure of aqueous solution of glucose is less than pure water? So student, this is pure water, okay, and you are heating this water suppose at T1 degree Celsius. So what will happen? Molecules of water will come into the vapor phase without feeling any hindrance, because no barrier is there which will not allow the water molecule to come into the vapor phase. Okay, water molecules are free to move into the vapor phase by taking the some amount of heat. Okay, when sufficient or number of molecules will come into the vapor phase, they will strike on the wall of container and will exert the pressure. Here this pressure is known as pure vapor pressure of water. Okay, pure vapor pressure of water. But student, another condition is that suppose I have added some non-volatile solute like glucose. What I have added? Glucose, okay, into the water. So what will happen? If you will heat this container at T1 degree Celsius like here, so now water molecule does not have sufficient space to go into the vapor phase because glucose molecules have covered the surface. So water molecules in sufficient amount will not come into the vapor phase. So lesser number of molecules will come into the vapor phase. Hence vapor pressure will be less. Here vapor pressure is PS, which is less than that of pure water. So is it clear to all why the aqueous solution of glucose का aqueous solution जो होगा वो क्या होगा? Its vapor pressure will be less because less number of water molecule will go into the vapor phase because non-volatile solute glucose has covered the surface, by which escaping tendency of water molecule has reduced. Okay, already we have discussed in the relative lowering in vapor pressure. Now question number 13, very interesting and important. Why does a sprinkling of salt helps in clearing the snow covered road in hilly areas? Mean suppose this is a road, okay, and during snowfall this road has covered by snow, okay, so no space is there for the movement of vehicle. So what the government does? Government sprinkle the salt over the road. So why? Generally ice mean pure water which has freezed at 0 degrees Celsius. Okay, this ice has covered the surface, mean the ice which is on road has the freezing point that is 0 degrees Celsius. This is ice, okay, and temperature of ice is 0 degrees Celsius. In relative lowering in vapor pressure, we have studied when we will add salt or sugar or any solute to the water or pure solvent. So what will happen? Its freezing point will be reduced. Here water is freezing at 0 degrees Celsius when it is in pure state. But when you will add salt to the water or to this ice, now it has become a solution. It has become a solution. Salt plus ice. Ice mean water. Water is a solvent. Okay, so water, that is H2O, and salt has become a solution, and this solution will not freeze at 0 degrees Celsius. But the temperature of ice is 0 degrees Celsius. So what will happen? At 0 degrees Celsius, mixture of ice and water will be liquefied. ये क्या हो जाएगा आपका? Liquefied हो जाएगा. As a result, this liquefied mixture will flow on rod. As a result, road क्या हो जाएगी आपकी? Clear हो जाएगी. एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से समझिए. आइस जो होती है आपकी 0 डिग्री पर फ्रीज होती है. तो मान लेते हैं एक आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गई है, लेकिन आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. आइस
लें और उसके अंदर आप क्या ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, सॉरी क्या ऐड कर दें, हाँ सॉल्ट ऐड कर दें। सो व्हाट विल हैपन, सॉल्ट होगा इस वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है स्टूडेंट, अब ये 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा। 0 डिग्री पे तो प्योर वाटर फ्रीज होता है, जब उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो माइनस में फ्रीज होता है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि रोड पे जो आइस पड़ी हुई है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन अगर हम उसमें सॉल्ट डाल देंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा वहाँ पर, और वो सॉल्यूशन अब 0 पे फ्रीज नहीं होगा। लेकिन आइस का टेम्परेचर तो 0 है, यानी कि अब वो 0 पे लिक्विड बन जाएगा और वो बह के रोड को आपके क्लियर कर देगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबिंग ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एसीटोन ऑफन गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन टू द स्किन। सो ये क्वेश्चन आप काफ़ी बार प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज योर palm, okay, so you have rubbed some isopropyl alcohol. So what will happen, isopropyl alcohol is a volatile component, it will take the heat from your palm and will get evaporate, खुद इवेपोरेट होके चला जाएगा। हीट ली आपकी पाम से, हथेली से, तो आपकी हथेली का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगी, यहाँ पर ठंडक लगेगी। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, थिनर, पेट्रोल, ठीक है ना, इनको टच करने पे फील करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन, आई टोल्ड यू दैट इन the car radiator, suppose this is the engine, so there is a space in which you filled the water, okay, so here water act as coolant, it cools the car engine, okay, so but on very cold weather, in a cold weather water may get freeze, ये freeze हो सकता है, but if it will be freezed then your car will not be start easily, क्योंकि वो फ्रीज हो गया, ज़्यादा ठंडा हो गया इंजन आपका। सो दिस वाटर शुड नॉट बी फ्रीज इन योर कार रेडिएटर। सो सम अदर सोल्यूट लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर की फ्रीजिंग से वो उसको बचा लेता है, वाटर को क्या करता है, फ्रीज होने से रोक लेता है। सो दिस मिक्सचर इज नोन एज एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन। व्हाट इज, वाटर plus ethylene glycol, water plus ethylene glycol, okay, so this is what is the use of it, तो आप क्या बताओगे, it does not allow the water to get freeze, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आइस बनेगी नहीं इंजन के अंदर, तो आपका इंजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यू विल स्टडी इन पॉलीमर चैप्टर ऑल्सो, ओके। Next is Raoult's law is a special case of Henry law. How? So students, Raoult's law state that vapor pressure of a volatile component is directly proportional to mole fraction of that component. हालांकि जब आप इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो होता है P नोट A होता है। दिस इज Raoult's law. And what is Henry law? So students, Henry law is the vapor pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of that gas which has dissolved in the solution. So according to Raoult's law and Henry law, mathematical expression is same, that is vapor pressure or partial pressure. Here we are using vapor pressure of a volatile component is directly proportional to mole fraction. Here I am saying partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction. So दोनों में सिमिलरिटी है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ है P नोट A कॉन्स्टेंट और यहाँ पर क्या होता है, हेनरी कॉन्स्टेंट होता है। ये भी एग्जाम में एक केस आया हुआ है एक बार कि प्रूव या शो दैट राउट्स लॉ इज नॉट ए केस ऑफ हेनरी लॉ। सो आप बताओगे हेनरी को कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, P नोट A कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट इज a stereoscopic constant Kf of water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. What does it signifies? So students, in previous video I told you the definition of Kf. So what is Kf? Generally again we will discuss. Kf is the delta Tf is equal to Kf into molarity. So what I said, Kf is the elevation in boiling point of 1 molar solution. So here 1.86 is given to you, value is 1.86, okay. So what you will say, so 1.86 is what, depression in freezing point of 1 molar solution. So definition will be
डेफिनेशन विल बी, व्हाट डज इट इंडिकेट, कि एफ क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि किसी 1 मोलर सोल्यूशन में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है. अनदर डेफिनेशन, इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट per kilogram of solvent, per kilogram of solvent. Okay, so it is 1.86, kf is 1.86. so how will you define what is kf? So you will say when 1 mole of solute is added to a 1 kilogram of solvent. अच्छे से समझो, अगर आप 1 मोल किसी सोल्यूट का 1 किलोग्राम वाटर में ऐड कर दोगे तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में 1.86 केल्विन की कमी आ जाएगी. चाहे वो सोल्यूट जो मर्जी डाल दें आप, चाहे आप शुगर का वो चाहे आप सोल्ट डाल दें 1 मोल, चाहे आप शुगर डाल दें 1 मोल, चाहे आप यूरिया डाल दें 1 मोल. 1 मोल डालना है आपने, और कितने वाटर में, 1 किलोग्राम वाटर में. तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में 1.86 केल्विन की कमी आ जाती है. मतलब अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा होगा तो अब -1.86 केल्विन पे वो फ्रीज होगा, या डिग्री सेल्सियस में. सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छे से समझ लो, आपका ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा. क्या है, व्हाट इज केएफ? KF is the depression in freezing point when 1 mole of solute is added to 1 kilogram of solvent. So 1.86 क्या है ये? 1.86 is the depression in freezing point when 1 mole of solute is added to the 1 kilogram of solvent. Okay. Next is, on mixing acetone with chloroform, solution is heated. So I told you acetone, this one acetone. Okay. In acetone, this is acetone, I am going to add the chloroform. Formula of chloroform is CHCl3. So student, what will happen when you will mix these two component, then they will form the hydrogen bond. And we know that bond formation is always exothermic. Exothermic है यानी कि bond formation पे heat निकल रही है तो वो solution कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, heat up हो जाएगा. Okay, so it will show the negative deviation. Yesterday I told you this topic in question number this one non-ideal solution exhibit either positive deviation or negative deviation. In this question, that is in question number 4, I explained this topic. Okay, next question number 19. Define the following term. First is minimum boiling azeotrope. So student, compound which will show the positive deviation, not compound, mixture which will show the positive deviation, these are known as minimum boiling azeotrope. So what are the solution which will show the positive deviation? Suppose I am talking about the ethanol, okay, and there is a interaction between the ethanol molecule C2H5OH. So it is the hydrogen bonding between the H and OH. But as I will add the cyclohexane to it, now this hydrogen bond has broken down by the cyclohexane. So student, what will happen? A boiling point of ethanol will be reduced because this hydrogen bond has been reduced. Strength of this bond has been reduced. Okay. So what will happen? No extra heat will be supplied to this solution to break this hydrogen bond. Okay. Already वो वहाँ पर टूट गया है, इसलिए ये जो मिक्सचर होगा ये कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा. इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इंक्रीज हो जाता है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द पॉजिटिव डेविएशन. सो दिस इज maximum boiling. And azeotrope mean when you will heat this mixture, then ethanol as well as cyclohexane both will go in the vapor phase simultaneously without changing the composition. Again I am telling what is azeotrope. Suppose you have A or B, okay, but when you will heat A and B, it may be the possibility that only A will go into the vapor phase because A is volatile and B is non-volatile. But sometime a mixture may be like this. Suppose again A and B is there, but when you will heat A and B, both A and B will go into the vapor phase. So there is no change in the composition. Composition in liquid phase is AB. Composition vapor phase is also AB. So this is azeotrope. तो azeotrope क्या होते हैं? Which boils without changing the concentration in liquid as well as vapor phase. Okay, this is not azeotrope. So it is azeotrope. Okay, if it boils at lower temperature, then it is known as minimum boiling azeotrope. It is clear?
Now second part, what a non-ideal solution. Non-ideal solution which will not follow the Raoult's law. Okay, which will not follow the Raoult's law. Second, O's delta V mixing is not equal to 0. Second, change in enthalpy is not equal to 0. Student, already I have told you in the positive and negative deviation. The solution which will exhibit either positive or negative deviation from Raoult's law, these are known as non-ideal solution. तो फोर्थ क्वेश्चन की वीडियो देखें, वो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यस्टरडे, जो हमारा पार्ट 1 की वीडियो है. ओके, नाउ एबनॉर्मल मोलर मास. सो स्टूडेंट, सोल्यूट विच विल अंडरगो इन डिसोसिएशन and association, their molecular mass will not come exact or theoretical molecular mass. जो molecular mass होगा ऐसे solute का, जो dissociation और association में जाएंगे, उनका molecular mass theoretical molecular mass के इक्वल नहीं आएगा. theoretical molecular mass, suppose आप NaCl का निकाल रहे हैं, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो आंसर आपका theoretical कितना आया 58.5. बट अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे लाइक elevation in boiling point delta TB is equal to KB into mol WB upon MB, ठीक है ना. Any colligative property if you will use to calculate the molecular mass of solute, for example you are using elevation in boiling point, you can find MB from here, then it will not come equal to the 58.5, it will come approximate 28.9, it will come half, approximate half. So this molecular mass is known as abnormal molar mass. So एबनॉर्मल को नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं, वेंटो फैक्टर. मैंने एक वीडियो डाली हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो बोर्ड पे, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वेंटो फैक्टर के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. डेफिनेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन इन 2021. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय द फॉलोइंग टर्म, द बैंड एंड एनोक्सिया. सो स्टूडेंट, व्हाट इज बैंड एंड एनोक्सिया? सो दिस इज योर होमवर्क, बिकॉज वन टर्म इज रिलेटेड टू योर 11th क्लास Boyle's law and second term is related to 12th class Henry law. Okay, both are related to when you go into the height. So what will happen, student, when you will go into the height, pressure is less, atmospheric pressure is less. तो आपने जैसे कोई ऑक्सीजन गैस इनहेल की, ठीक है ना, तो उस ऑक्सीजन गैस का ब्लड में डिजोल्व होना जरूरी है. तो हेनरी लॉ क्या कहता है, वो गैस तभी डिजोल्व होगी जब प्रेशर लगेगा. तो आप हिली एरिया पर गए, हिली एरिया पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, यानी कि आपकी बॉडी में प्रेशर कम लग रहा है. आपने ऑक्सीजन गैस तो ली, लेकिन स्टूडेंट वो ऑक्सीजन गैस आपकी बॉडी ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पा रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. इस टर्म को क्या बोलेंगे, ये आप मुझे बताओगे. इसको एनोक्सिया बोलते हैं या द बैंड बोलते हैं. दूसरी टर्म आपको मैं बता देता हूँ, स्कूबा डाइवर वाली मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है. स्कूबा डाइवर मीन गोताखोर. when scuba diver will go into the depth of ocean, okay, to capture the picture or video of the fishes, then it will carry the oxygen, nitrogen and helium, okay, as the respiratory gas. So what will happen when he will go into the depth of ocean? So water of the ocean will apply the pressure on his body. So as a result, both gases, oxygen and nitrogen, will get dissolved in his blood. But when he will come on the surface, so what will happen, nitrogen again will come into the gaseous phase, क्योंकि नाइट्रोजन तो बॉडी में कंज्यूम नहीं होगी. So it will create the pain. So what is it known as? It is known as the band. और एनोक्सिया क्या होता है, जब आप हिली एरिया पर गए और वहां पर आपको क्या हुआ, ऑक्सीजन तो लिया आपने, लेकिन प्रेशर कम था एयर का, तो वो आपके ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की कमी हुई, आपको चक्कर आना शुरू हो गया. उसको क्या बोलते थे, एनोक्सिया. ओके, next is which solution of the same solute has higher concentration and why? 1 molar and 1 molar. So student, molarity क्या होती है, molarity moles of solute per liter of solution. Per liter mean I am taking the example of 1000 centimeter cube of solution, 1000 centimeter cube of solution. So what is molality? Moles of solute per kilogram of solvent. So per kilogram को मैं ग्राम में बदल लेता हूँ और ग्राम भी मैं सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेता हूँ. So स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आप यहाँ से देखिए, सोल्यूट जो है वो 1 लीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में है. सोल्यूशन मीन बोथ सोल्यूट एंड सोल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट. ओके, तो सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों मिलके 1000 है. ओके, बट हियर ओनली सोल्वेंट इज 1000. सो वाटर किस में ज्यादा है, सोल्वेंट तो वाटर होता है ना, तो यहाँ वाटर ज्यादा है, अकेला वो 1000 है. यहाँ दोनों मिलके हैं, सोल्यूट और सोल्वेंट. तो यहाँ पर जो आपका सोल्ट है वो 1 लीटर प्योर सोल्वेंट में है, प्योर वाटर में है. बट हियर सोल्यूट एंड सोल्वेंट बोथ आर
1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिसमें वाटर कम होगा वो ज़्यादा मीठा होगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। सो विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड? 1 मोलर इज मोर कंसनट्रेटेड। आई हैव टोल्ड यू दिस टॉपिक इन क्लास 11th. Okay, so next topic we will discuss tomorrow. Question number 22 to 28 we will discuss tomorrow. Then we will start the numerical part. Okay, bye.